Hello बच्चों, let's read the question. The question here says we are given with statement type question. Statement 1 given है discovery of first antibiotic penicillin was a chance discovery. Statement 2 Alexander Fleming while working on streptococci observed a mold of Penicillium notatum growing in unwashed plates. We have to mark 1 both statement 1 and 2 are correct. Mark 2 if both statement 1 and 2 are incorrect. Option 3 statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4 statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So for this question our key concept would be हमारा key concept होगा regarding the antibiotics. So antibiotics क्या होते हैं? Certain chemicals which are produced by microbes which may kill or retard the growth of other disease causing microbes. So उनको बोला जाता है antibiotics. So जो सबसे पहला antibiotic था, first antibiotic, that was your Penicillium notatum, that was discovered by Alexander Fleming. Actually he was working on a bacteria named Streptococcus. वो Streptococcus पे काम कर रहे थे. And during his experiment क्या हुआ कि एक जो unwashed plate थी, उसके ऊपर जो है पेनिसिलियम ग्रो हुई. पेनिसिलियम नोटेटम, ये जो मोल्ड है ये ग्रो हुई. एंड ये जो प्लेट थी अनवॉश्ड प्लेट जिसके ऊपर पेनिसिलियम नोटेटम की ग्रोथ थी, इस वाली कल्चर प्लेट पे जब बैक्टीरिया को फर्दर ग्रो किया तो यहाँ पे जो है बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो नहीं हुई. मींस यहाँ पे जो पेनिसिलियम है इसने कुछ केमिकल्स को रिलीज किया जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रोथ नहीं हुई. तो मींस ये जो डिस्कवरी थी इट वाज अ चांस डिस्कवरी. So statement 1 given थी discovery of first antibiotic penicillin was a chance discovery. Yes, it was a chance discovery. Alexander Fleming जो कि किस पे काम कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकाई पे काम कर रहे थे. He observed a mold Penicillium notatum growing in unwashed plate. So जो unwashed plate थी उसके ऊपर क्या ग्रो हुई? Penicillium notatum ग्रो हुई. तो हमारी statement 1 and 2 दोनों ही करेक्ट हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1. Fine answer for the question is option 1. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.